Union Territory to host this G20 meeting of Tourism Working Group that is deliberating on global architecture for sustainable tourism. Friends, Jammu Kashmir has always been a center of wisdom, knowledge, inclusive culture and breathtaking landscape that is divine to travelers. Famous poet Amir Khusro, while describing the natural beauty of Jammu and Kashmir in 13th century, had said, and I quote, "Gar Firdaus, Barwe Zamiyast, Hamiyasto, Hamiyasto, Hamiyast." If there is a paradise on earth, it is this, it is this, it is this. So it is not surprising that in the modern days, one of the oldest travel guidebook published at Lonely Planet chose to call Jammu Kashmir as Switzerland of India. Friends, for almost 30 years, this land of peaceful coexistence of almost all religious sects had to suffer state-sponsored terrorism by our neighboring country. However, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, through development schemes that empowers masses and Union Territories' effective administration, isolated the terror ecosystem which thrived with the support from across the border. Jammu Kashmir is witnessing a new era that has opened limitless possibilities of growth and peace. Now even foreign investments are also coming into Jammu and Kashmir. Green shoots of better times people are anxiously looking up to. Friends, I will run you through broad contours of our deep dive initiatives to demonstrate India's resolve that Jammu Kashmir should also benefit from the virtues of democracy like the rest of the states and Union Territory. Equally pertinent is that tourism cannot grow in isolation. The economics of it is fine. The tourism needs good infrastructure, sound policies and effective and responsive governance. No less fundamental to me is the fact that only peace and happiness of people can bring warmth in the hospitality we Indians eternally enjoy. And I would like to mention here that tourism in Jammu Kashmir is also a reflection of multi-religious and multicultural ethos of India. Today, Jammu Kashmir stands among the developed regions of India on some miserable milestones, and we are committed for people's prosperity both economically and socially. Honorable Prime Minister has completely eliminated injustice, exploitation and discrimination which several sections of society faced for 7 long decades owing to circumstances that evolved mostly because of orchestration from abroad. Friends, we are ensuring social equality and equal economic opportunity to all citizens, which is also enabling them to contribute to the nation building. Grassroots democracy has been strengthened, new industries are coming up, rapid agricultural growth is making our villages prosperous, new institutions have been opened up in higher education, youths are being trained for Industry 4.0, infrastructure development is progressing rapidly, and our emphasis on technology is transforming Jammu Kashmir into a digital society. In the past 4 years, the ranking of Jammu Kashmir and the various parameters of sustainable development goals have gone up. Thanks to visionary leadership of Honorable Prime Minister Modi ji. And the world can see, the entire society, especially the young generation, is scripting a bright future for themselves and the nation. The speed and scale of rapid development in Jammu Kashmir are awe-inspiring. Our speed to execute infrastructure projects has gone up almost 10 times. I will give you a small example. Only 9,229 projects were completed in the year 1890. In the last financial year, we have completed 92,560 projects. This achievement is a testimony to our resolve of peace and prosperity and making all our citizens equal partners in this journey of growth. Friends, the COVID pandemic made the world realize the hard way the virtues of travelers' well-being and also the values of a shared vision, one earth, one family, and one future. The paradigm shift towards sustainable living
Inclusive and sustainable development is also an opportunity to provide new impetus to sustainable tourism. I am truly delighted that under India's G20 presidency, the G20 Tourism Working Group is focusing on 5 interconnected priority areas: green tourism, digitization, skills, tourism, MSMEs, and destination management will provide a roadmap for tourism as a tool for achieving sustainable development goals. Friends, it's encouraging for us to say that Jammu and Kashmir is already working on a few of the priority areas identified by the G20 Tourism Working Group, like on green tourism, skills, tourism MSMEs, and digitalization. In the post-pandemic era, these 5 key building blocks will promote environmental awareness, protect the ecology, and improve the economy and livelihoods of communities and inclusive growth of stakeholders. During the previous Tourism Working Group meetings, the world has seen that Honorable Prime Minister's vision of lifestyle for the environment is at the center of transformation of tourism sector. As I said earlier, the majestic peaks, crystal clear lakes, and serene green landscape of Jammu Kashmir is more than a tourism destination. It is a poetry. It is a land of realization. It is an energy field vibrating with the ageless Indian cultural values. Under the guidance of Honorable Prime Minister, we have ensured that the transition in tourism sector in the backdrop of pandemic focuses on needs of travelers, interests of industry stakeholders, create employment opportunities, and promote environmental awareness. Numbers are adding to the narrative. Last year, a record number of 18 million tourists visited Jammu Kashmir, and the last year, tourism sector made more than 7% contribution to the Jammu Kashmir GDP. We have identified 300 new destinations to promote green tourism, small and medium enterprises, youth and women entrepreneurs, and involve local communities to support the sustainable tourism. This Himalayan region is blessed to have 55% green and forest cover, and last year alone, we have planted more than 16 million trees to give a renewed push to green tourism and to provide new gateways and stunning eco destinations for the domestic as well as international travelers. Tourism sector in Jammu Kashmir has been accorded the status of industry and all fiscal incentives as per our industrial policy. And I can tell you, we are receiving massive investment proposal from the stressed industries in hospitality sector. Friends, Jammu Kashmir used to be the favorite location for Bollywood film industry till late 1980s. After a long pause of almost 4 decades, we have revived the relationship with Bollywood and launched a film policy in 2021 to attract more investment into film sector and to make Jammu Kashmir most popular film shooting destination. Last year alone, more than 300 movies were filmed in the region, and such enthusiasm is bringing about a qualitative change in the lives of the people. For the travelers who want to explore the charming and adorable villages, we have come up with homestay facilities. It is being promoted and marketed by harnessing the power of digital tools, and it also ensures that incredible ecology is protected and promoted. We are grateful to Honorable Prime Minister Mr. Modi for his consistent effort to develop Jammu and Kashmir as one of the most sought of the tourist attraction in the world. Places like Gulmarg, Pahalgaon, Sonmarg, Bangas Valley, Lolab Valley, Srinagar, Jammu, Kishtawar, Sanasar, Gurez, Patni-Top are now on the global tourism map and offering stunning scenery, skiing, snowboarding, trekking, beautiful and iconic mountain ranges, spiritual experiences, and rich cultural canvas. Several destinations in Jammu Kashmir are living examples of connect between the ancient and the modern, inclusive culture, history, music, and traditional cuisine that can truly provide elevated travel experiences to the people.
We are developing the country's first book village on the banks of Dal Lake and many hiking trails for tourists who love tranquility of nature. Our aim is to make the countryside and popular destinations more sustainable and preserve the beauty of fascinating heritage sites. I am confident, under the leadership of Honorable Prime Minister Mr. Modi, Jammu Kashmir will soon find its place in the top 50 destinations in the world, and it will be on the travel bucket list of global travelers. So this empowered gathering, I invite the world to Jammu and Kashmir. Give us a chance to host you and for you to know us. Come, enjoy and rejuvenate yourself. With these words, I once again welcome delegates of G20 nations. I wish you all a fruitful, enlightened discussion and positive outcomes that will help us building a global architecture for sustainable growth in tourism sector. I hope you will also enjoy our warm hospitality and breathtaking views of Dal Lake. Jai Hind. Thank you, sir. I would like to express gratitude to Honorable Lieutenant Governor for sharing his thoughts, and would also like to thank him for the wonderful hospitality extended by the administration under his leadership to all the G20 delegates and invitees who are present here. Now I would like to invite Honorable Union Minister of State for Science and Technology, Shri Jitendra Singh Ji, to share his thoughts with us. Honorable Minister for Tourism, Government of India, Shri G. Kishan Reddy Ji, Minister of State, Shri Ajay Bhatt Ji, Lieutenant Governor, Shri Manoj Sinha, Sherpa Shri Khitab Kant, Coordinator Mr. Shimla, Secretary Tourism Arvind Singh, OSD Tourism Vidyavati Ji, senior officers from the Ministry of Tourism, and most importantly, our revered guests and delegates from different G20 and invitee countries. At the outset, it is my pleasure to welcome you all. Incidentally, this also happens to be my native place, and it's also equally gratifying for me to be a part of this event. It's a bright sunny morning today on the banks of Dal Lake, and I must say that it's a special year indeed for India, the year of 2023. This is the year when India got the opportunity to host G20 under the leadership of Prime Minister Mr. Narendra Modi. This also happens to be the International Year of Millet, which was again at the west of India, one of the staple rights in other parts of the country, which is I think for the second time. It was about 8 years back. It was UN on this proposal of India declared International Day of Yoga, the 21st of June. So I think it's a very auspicious timing of the event happening over here and all the friends from different parts of the country being here. As you all know, and as you've been going around since yesterday, I'm sure this visit of yours will also add some added value, the picturesque scenic beauty around, and of course the cuisine which you might have tasted yesterday and will continue to do today as well. I think coming straight to G20 presidency, I'm sure you must have realized that the theme, which is very thoughtfully worked upon by Prime Minister Modi, is Vasudhaiva Kutumbakam, which in other words means one earth, one family, one future. And if you give it a deeper thought, it is in fact a reflection of the reverence that traditionally India has for the value of life. Life in its all forms, the human life, the animal life, the plant life, the microorganism life. And the G20 logo reflects three colors, which are indeed the colors of the tricolor, which also happens to be the national flag of India. And the visual of Mother Earth
the logo, we could say symbolizes our pro-planet approach or pro-planet leanings. And today when we meet here at the scenic spot of Srinagar, we have this deep realization within us that we are all a part of the global world, and India under Prime Minister Modi is very conscious of that. Our challenges are global, our concerns are global, our benchmarks are global, and our growth has also to be global. And that's why Prime Minister Modi has been time and again in COP meeting expressing his concern about the climate challenges. We have also committed to achieve net zero target by 2070. And I think another significance of holding this event in Srinagar is also that it's a strange blend of our traditional heritage and the most modern infrastructural monuments with cutting-edge technology. Srinagar, Kashmir, is being one of the earliest seats of learning both in Persian as well as in Sanskrit. It has a wide range of craftsmanship, artisanship, ranging from carpets, embroidery, shawls. Recently we had Basoli painting achieving GI tag. And on the other hand, the most infrastructural upgraded monuments. We have the highest railway bridge of the world over here, which is 35 meters higher than the Eiffel Tower. It's located on river Khitab, which is one of the largest rivers of India. Incidentally happens to be a part of the constituency which I represent in the lower house. We have the Asia's longest bi-directional road tunnel, which is known as Bhukari tunnel. Incidentally, again a part of my constituency, but that is, I think, what Jammu Kashmir is all about. And I'm sure all these perspectives would add value to our thought processes. I was told in the earlier meetings, the priorities have been green tourism, digitalization, skill, MSME tourism, destination management. I'm sure from here we'll move on. And India, I will just conclude by saying is ready to share the global responsibility as far as our obligation towards economy is concerned, towards environment is concerned, and towards society is concerned. And also one more aspect which was not talked about over yesterday and this morning is that Kashmir also has a significant amount of another aspect of tourism, and that is science tourism. A very few kilometers away from where we are sitting now, we have a place called Gulmarg and another township called Bhadrawa, another district of Doda, from where originated the Aroma mission, which was initiated by the Modi government. This is also popularly come to be known as Purple Revolution. A huge amount of lavender cultivation happening at a very large scale and providing agri-tech startup livelihood opportunities to thousands and thousands of young men and women in the agriculture sector. And therefore, I think it's also some kind of a distinction of the place where we are sitting today to discuss tourism in various facets. When we discuss it in various facets, the agri-tourism combined with the agri-tech is also one important salient feature of the place that we are gathered today. I'm sure when we go back from here, we shall go back wiser than before and also much more resolved to work together cohesively for the common cause and the common challenge that we face. Thank you once again. Thank you, Honourable Minister, for your insights and remarks. May I request the Honourable Minister for Tourism, Culture and Development of Northeastern Region, Shri G. Kishan Reddy, to welcome the delegates and deliver his address. Namaskar. तो चलिए यहां पर बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार फौरन लौट कर आते हैं और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में।
जन्नत नसीर कश्मीर में G20 की बैठक का शानदार आगाज। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की हुई बैठक। 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जी किशन रेड्डी और G20 शेरपा अमिताभ कांत ने G20 की बैठक का किया संबोधित। कश्मीर से बॉलीवुड फिल्मों के रिश्तों को लेकर हुई चर्चा। अमिताभ कांत ने कहा कि कश्मीर में 370 फिल्मों और OTT की शूटिंग के लिए लिया गया है परमिशन। कश्मीर में G20 की बैठक शुरू हुई। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने बैठक का स्वागत किया। कहा यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर के नकारात्मक सोच को बदल देगी। G20 की बैठक में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन समेत 17 देशों के 60 डेलीगेट्स ले रहे हैं हिस्सा। श्रीनगर में आयोजित G20 की बैठक में एक्टर रामचरण हुए शामिल। फिल्म and friends from the media, welcome to all the G20 members and invitee countries for third meeting of the Tourism Working Group under the India's G20 presidency in historic city in Srinagar. Friends, I would like to begin by highlighting the significance of progress made by the Tourism Working Group in last two meetings. All 5 priorities of the Tourism Working Group are green tourism, digitalization, skills, tourism MSMEs, and destination management have been completely endorsed by G20 member countries. We are moving closer to finalizing the outcome document for the G20 ministerial meeting to be held at the Goa headquarters. Friends, the Goa roadmap for tourism will act as a vehicle for achieving the sustainable development goals and the minister's declaration. In the previous working group meetings, I was happy to see that all participants unanimously adopted green tourism to be the most important priority along with the other priority areas. I am also glad to know that the UNEP made a presentation on travel for life, which is based on the Mission Life program by the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Friends, the Minister of Tourism Government of India is committed to working with all the G20 member countries, invited countries, and all the international organizations to promote sustainable practices that benefit both people and the planet. Spiritual destination and heritage locations also we should encourage. Busiest month, friends, the tourism working group meetings gives me confidence in the positive and meaningful direction that the working group is taking. The ideas will aid in developing tourism in mission mode in the globe. The summit will witness the going through agenda of the third tourism working group meetings. I am happy to see that tourism working group is progressing in the right direction. I am sure that the joint efforts of all the G20 members, invitee countries, international organizations will result in the achievement of inclusive and tourism industry. I wish you enjoy your stay and return to India over and over again with the family and friends and citizens of your respected countries. I am confident that across the country, in India, wherever you go, Indians are treating you, greeting you like their own family. Friends, we will, for coming 2 days, we will discuss with positively and with respectively and the contribution with good ideas
best ideas and for upcoming tourism activities in globe. Wishing you all the very best. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir, for your wonderful words of encouragement and your remarks. Ladies and gentlemen, delegates, the inaugural session has now come to an end. We will have a 15-minute break for tea and coffee. And we will all reassemble here at 10:45 p.m. for the first session of the third Tourism Working Group. Thank you. तो श्रीनगर में G20 मीटिंग का आज दूसरा दिन है और आज की मीटिंग से पहले प्रेस ब्रीफिंग की गई है। इसमें सबसे पहले LG मनोज सिन्हा ने जो G20 की कल बैठक हुई उसके बारे में जानकारी दी और इसके अलावा मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपनी बात रखी और उसके बाद केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अपनी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी। जिस तरह से कश्मीर की तस्वीर बदल रही है, G20 की इस बैठक के बाद टूरिज्म में जिस तरह से एक बूम आएगा और एक कश्मीर की तस्वीर बदलेगी, इस बारे में तमाम जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि जो कश्मीर में पिछले कुछ सालों में जिस तरह से कश्मीर की सूरत हाल बदली है, बड़ी तादाद में टूरिस्ट कश्मीर का रुख कर रहे हैं और इसके अलावा बहुत तेजी से कश्मीर के हालात में एक चेंज देखने को मिला है और इन तमाम चीजों का जो सेहरा है वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सर जाता है। इसी तरह से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी अपनी बात रखी और उन्होंने भी कहा कि G20 के इस बैठक के बाद जो टूरिज्म है या फिल्म टूरिज्म की अगर बात की जाए तो उसमें एक बड़ा बूम कश्मीर में एक तरह से आने वाला है और यह एक बड़ा कदम होगा जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए। चलिए, G20 बैठक पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। जन्नत नसीर कश्मीर में G20 की बैठक का शानदार आगाज। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की हुई बैठक। 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जी किशन रेड्डी और G20 शेरपा अमिताभ कांत ने G20 की बैठक का किया संबोधित। कश्मीर से बॉलीवुड फिल्मों के रिश्तों को लेकर हुई चर्चा। अमिताभ कांत ने कहा कि कश्मीर में 370 फिल्मों और OTT की शूटिंग के लिए लिया गया है परमिशन। कश्मीर में G20 की बैठक शुरू हुई। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने बैठक का स्वागत किया। कहा यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर के नकारात्मक सोच को बदल देगी। G20 की बैठक में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन समेत 17 देशों के 60 डेलीगेट्स ले रहे हैं हिस्सा। श्रीनगर में आयोजित G20 की बैठक में एक्टर रामचरण हुए शामिल। फिल्म RRR को लेकर की चर्चा। अपनी फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू पर भी किया डांस। कश्मीर में G20 बैठक आयोजित करना एक सुनहरा अवसर है। कश्मीर की संस्कृति और विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का एक बेहतरीन मंच। कश्मीरी कलाकारों का इजहार ख्याल। G20 शिखर सम्मेलन के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारत पाक नियंत्रण रेखा से सटे पुंछ जिले में भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं, जहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों को जिला मुख्यालय पर तैनात किया गया है। वाहनों और पैदल तो श्रीनगर में G20 बैठक का आज दूसरा दिन है और आज बैठक की शुरुआत प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई है। तमाम डेलीगेशन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें हमने देखा कि LG मनोज सिन्हा और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इसके बाद आज से दूसरे दिन की एक तरह से शुरुआत हो गई है। आज के
का जो दिन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला और कई गतिविधियां आज होने वाली हैं। आज का शेड्यूल भी काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। क्या कुछ आज खास होगा G20 की आज की इस बैठक में, इस पर और जानकारी लेंगे और बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला श्रीनगर से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार G20 की इस बैठक को वो कवर कर रहे हैं। रिफत अब्दुल्ला, कल हमने देखा था कि कल का दिन बड़ा शानदार रहा था। G20 की बैठक हुई और इसके अलावा जो डेलीगेशंस आए हैं उन्होंने डल झील में शिकारी का भी मजा लिया और कल का दिन बहुत अच्छा रहा। आज हमने देखा है कि दूसरे दिन की शुरुआत हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। LG डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जी किशन रेड्डी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से डेलीगेशन के साथ अपनी बातचीत रखी है। आज का जो शेड्यूल रहेगा, क्या कुछ होने वाला है, किस तरह कौन कौन से इश्यूज होंगे जिन पर बैठक होने वाली है? देखिए ओरेरा, अभी मैं इस वक्त SKICC श्रीनगर में हूं, जो मेन वेन्यू है इस मीटिंग का। जैसा आपने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपनी स्पीच की, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपनी स्पीच की और जो यूनियन मिनिस्टर हैं टूरिज्म के, उन्होंने भी अपनी बात रखी और सबने ये फोकस किया इस पे कि यहाँ पे टूरिज्म को मजीद फरोग देने की जरूरत है। उन्होंने डेलीगेट्स को बताया कि यहाँ पे बहुत जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है और आज मनोज सिन्हा ने इसी से शुरुआत की कि अगर फिर दोस्त बर्रुए जमी हमी अस्तो यानी अगर जमीन पर कहीं जन्नत है वो यही है। तो कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा कि यहाँ पे हालात जो है वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं और साथ ही यहाँ पे टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जहां तक एंगेजमेंट्स की बात है, कल आपने देखा कि शिकारा राइड भी कल की डेलीगेट्स ने डल लेक में बिल्कुल इसी स्पॉट पे जहां पे मैं इस वक्त हूं, क्योंकि SKICC मेन मेन्यू है, सारी फंक्शंस यहाँ पे ही होनी है। और आज असल में इनॉग्रल सेशन था, यानी जो G20 की मीटिंग्स यहाँ पे होनी है उसका इनॉग्रल सेशन आज ही था और वो अभी भी चल रहा है। उसके अलावा भी साइड इवेंट्स काफी सारे हैं। यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर की बात की जा रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिल्म प्रमोशन पे हमने देखा कि ज्यादा फोकस है। मध्य प्रदेश अपनी पॉलिसी बताएगा, गुजरात अपनी पॉलिसी बताएगा, क्या फिल्म पॉलिसी है उनकी फिल्म टूरिज्म के हवाले से। राजस्थान की फिल्म पॉलिसी जो है वो यहाँ पे बताई जाएगी और साथ ही जम्मू कश्मीर में जो फिल्म टूरिज्म पे या फिल्म प्रमोशन पे या फिल्म शूटिंग पे पॉलिसी बनी हुई है उसको यहाँ पे डेलीगेट्स के सामने रखा जाएगा। और यहाँ पे न सिर्फ फॉरेन टूरिस्ट्स के अराइवल के लिए बात हो रही है या उनका फ्लो कैसे बढ़ेगा उस पे बात हो रही है, बल्कि किस तरीके से फिल्मों की शूटिंग यहाँ पे बड़े पैमाने पे होगी। कल भी यहाँ पे यह बताया गया कि 370 के करीब जो है फिल्मों की शूटिंग के लिए रिक्वेस्ट की गई है, यानी परमिशन के लिए रिक्वेस्ट की गई है। तो 370 फिल्में अगर यहाँ पे शूट होंगी तो यह कहा जा सकता है कि हर लोकेशन पे कैमरा क्रू दिखेगा। तो क्योंकि ये जो कुल हिंदुस्तान में G20 का समिट होना है, उससे पहले ये वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग्स अलग अलग चीजों पे हो रही है, चाहे वो इकोनॉमी पे हो, चाहे वो यहाँ पे हालात पे हो, सिक्योरिटी पे हो, बाकी चीजों पे हो। लेकिन कश्मीर की जो ये मीटिंग है ये वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग टूरिज्म पर ही है, क्योंकि 2 मीटिंग्स पहले ही हो चुकी हैं, ये तीसरी मीटिंग है। यहाँ वर्किंग ग्रुप के जो डेलीगेट्स आए हैं वो यहाँ पे यही देखने आए हैं कि किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या फैसिलिटीज हैं, किस तरीके से। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पे डोमेस्टिक टूरिज्म तो बढ़ गया है, लेकिन अभी भी काफी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे नेगेटिव एडवाइजरीज जारी की गई थी कश्मीर के खिलाफ, यानी उनको बताया गया था कि कश्मीर सेफ नहीं है, कश्मीर ना जाए। यानी वहां की गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स को बताया था कि कश्मीर जाना सेफ नहीं है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उन सारी एडवाइजरीज को कैसे रिमूव किया जाएगा उस पर बात हो रही है। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने काफी जो है हालात के बारे में भी काफी बातें की, लेकिन ज्यादा फोकस इसी पे रहा कि किस तरीके से टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है। जैसे आपने कहा था कि आज क्या क्या शेड्यूल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मीडिया पर्सन से भी इंटरेक्शन करेंगे, शायद इनफॉर्मल इंटरेक्शन होगी। उन्होंने जो है राजभवन के लिए इन्विटेशन दी है और भी बाकी ये जो डेलीगेट्स आए हैं वो यहाँ के लोगों से भी मिलेंगे, जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं या टूरिज्म से वाबस्ता जितने भी लोग हैं उनसे मिलेंगे, उनसे क्या इंटरेक्शन होगी। और ऐसा उम्मीद की जा रही है कि जब ये यहां से जाएंगे ये कश्मीर के टूरिज्म प्रमोशन के ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे अपने अपने ममालिक में, उसी पे शायद ज्यादा फोकस होगा। हुरेरा
हाँ बिल्कुल अब्दुल्ला तमाम बहुत तफसील में तमाम चीजें आपने बताई, और खासतौर से क्योंकि आपने कहा कि फिल्म टूरिज्म और टूरिज्म पर ही आज भी एक तरह से फोकस होगा G20 की इस बैठक में। तो टूरिज्म सेक्टर में कई तरह के फायदे हो सकते हैं। G20 की जितने कंट्रीज और जितने जो मेंबर्स डेलीगेशंस आए हुए हैं, इससे टूरिज्म के कई सेक्टर हैं जिनमें हम देख रहे हैं कि उनमें एक तरह से बूम आएगा, उसमें एक तरह से फायदा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रिफत अब्दुल्ला आपने कही थी कि लोकल टूरिस्ट तो बड़ी तादाद में आ रहे हैं, हमने देखा कि रिकॉर्ड तादाद में लोकल टूरिस्ट आए, लेकिन फॉरेन टूरिस्ट कश्मीर कब आएंगे या किस तरह आएंगे, इस पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि 90s से पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा फुटफॉल था टूरिस्ट्स का, जो फॉरेन टूरिस्ट्स थे जो मुख्तलिफ ममालिक से आते थे। यहाँ पे अगर ज्यादा होटल्स का कोई इस्तेमाल करता था वो फॉरेन टूरिस्ट्स थे, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट्स का एक अपना एक सेटअप रहता है आने का, स्पेंडिंग का, अलग अलग जगहों पे जाने का, ट्रैकिंग करते हैं वो, और ये समझा जाता है कि सबसे ज्यादा खर्च करते हैं वो पैसा, उससे इकोनॉमी बूस्ट होती है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर की बल्कि इन जनरल उस कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट होती है जहां पे फॉरेन टूरिस्ट्स का फुटफॉल बढ़ता है, यानी कि हमें वहां से रेवेन्यू आता है बाकी ममालिक से, उस पे फोकस किया जा रहा है। चूंकि ये इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं, ये G20 कंट्रीज के अलावा बाकी कंट्रीज से भी आए हैं। हालांकि चाइना को छोड़ के, जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमिताभ कांत ने कहा कि चाइना को छोड़ के बाकी ममालिक आए हैं, हालांकि उनसे यह भी पूछा गया कि क्या सऊदी अरबिया या तुर्की ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ कंट्रीज से जरूरी नहीं है कि हर कंट्री से आए लोग, और यह भी जरूरी नहीं है कि वहां के ऑफिशियल्स ही आए, बल्कि अगर ट्रैवल एजेंट्स या टूर एंड ट्रैवल से वाबस्ता कुछ लोग वहां पे आएंगे तो वो भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं इनडायरेक्टली अपने कंट्री की। तो यहां पे इस तरीके के भी काफी सारे लोग हैं। एक तो हो गए G20 कंट्रीज के जो लोग हैं, तो उन्होंने साफ कर दिया ऑफिशियली कि चाइना नहीं आया, यानी चाइना इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस मीटिंग। लेकिन बाकी कंट्रीज के बारे में उन्होंने ये कहा कि बाकी सब आए, और साथ ही कहा कि 29 कंट्रीज से 61 यानी 29 फॉरेन कंट्रीज से 61 डेलीगेट्स यहां पे आए हैं, जिनके साथ बात हो रही है, जिनको यहाँ की पॉलिसीज के बारे में बताया जा रहा है, जिनको यहाँ के आर्ट एंड क्राफ्ट कल्चर की प्रिजर्वेशन की बात की जा रही है। इको टूरिज्म एक बड़ा चैलेंज है, और दूसरा एनवायरनमेंट को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उस पर बात हो रही। तो कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि ओवरऑल जो पैकेज है टूरिज्म का, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि फॉरेन टूरिस्ट्स के अराइवल की जहां तक बात है, यानी प्री-90s जो सिचुएशन थी उससे बेटर हो, उसके लिए बात की जा रही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बढ़ गया है ओवरऑल यहां पे, चूंकि कुदरत ने बहुत कुछ दिया है, यहाँ के माउंटेन्स, यहाँ की वाटर बॉडीज। ये एक ऐसी जगह है, खासतौर से श्रीनगर, जहां पे पहाड़ भी हैं, जहां पे अर्बन फॉरेस्ट भी है, जहां पे आपको लेक्स भी मिलेंगे, हाउस बोट मिलेंगे, शिकारा मिलेंगे। कश्मीर इज अ कंप्लीट पैकेज फॉर द टूरिज्म, नॉट फॉर द डोमेस्टिक। यानी कश्मीर तो एक तरह से तैयार है मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए, लेकिन अब जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो आएंगे किस तरह से, इसी पर एक तरह से गौर फिक्र आज की इस बैठक में किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रिफत अब्दुल्ला, बहुत तफसील से इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ है। श्रीनगर में G20 बैठक के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की पाकिस्तान ने। 12 मई को ही पाकिस्तानी मिशनों को पत्र भेजा गया था। पाकिस्तानी मिशनों के साथ प्रचार सामग्री साझा की गई थी। लेटर में NRC, खालिस्तान, पुलवामा और अल्पसंख्यकों का जिक्र किया गया था। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने के लिए हैशटैग का भी प्रस्ताव रखा गया था। तो पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर से सामने आई है। आपको बताते चले कि जिस तरह से कश्मीर में शानदार तरीके से G20 की बैठक हो रही है, पाकिस्तान इस पर तिलमिलाया हुआ है और पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। श्रीनगर में G20 की बैठक के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की है पाकिस्तान ने। 12 मई को पाकिस्तानी मिशनों को पत्र भेजा गया था। पाकिस्तानी मिशनों के साथ प्रचार सामग्री साझा की गई थी। पत्र में NRC, खालिस्तान, पुलवामा और अल्पसंख्यकों का जिक्र किया गया था और इसके अलावा बाकायदा सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने के लिए हैशटैग का इस्तेमाल भी किया गया था। प्रस्ताव भी एक तरह से रखा गया था। तो पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। वो कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता है। जब देखता है कि भारत को किस तरह से बदनाम किया जाए या भारत की जो तस्वीर है उसे दुनिया के सामने किस तरह से बिगाड़ा जाए या भारत की जो तस्वीर है वो दुनिया के सामने किस तरह से खराब की जाए, इसी फिराक में एक तरह से पाकिस्तान लगा रहता है। और चलिए इसी पर और बातचीत करेंगे।
दिल्ली से शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़े हुए। शैलेंद्र, पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है, क्योंकि हर बार हम देखते हैं, सुबह भी आपसे बात हो रही थी कि पाकिस्तान इस फिराक में रहता है कि कैसे भारत की जो तस्वीर है वो दुनिया के सामने खराब की जाए। लेकिन हमने देखा कि कल शानदार तरीके से G20 की बैठक कश्मीर में शुरू हुई और आज फिर जो डेलीगेशन है उनकी बैठक शुरू हो चुकी है। तो पाकिस्तान से सब चीजें हजम नहीं हो रही है, पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। देखिए, बिल्कुल आज जो मीटिंग चल रही है, कल जो मीटिंग शुरू हुई थी उससे ठीक 10 दिन पहले एक कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से कि माहौल बिगाड़ा जाए। इसीलिए एक चिट्ठी लिखी गई थी ISI की तरफ से सभी पाकिस्तानी मिशंस को, सभी पाकिस्तानी दूतावासों को, एम्बेसीज को भारत के खिलाफ एक गलत कैंपेन चलाने के लिए, इस मीटिंग को स्कटल करने के लिए। सब्जेक्ट में ही लिखा गया है कि मीटिंग को कैसे रोका जाए, इसके लिए प्रोपेगेंडा मटेरियल शेयर किया गया पाकिस्तानी एजेंसीज की तरफ से सभी मिशन के साथ में। और इसमें तमाम चीजें लिखी गई हैं भारत के खिलाफ, भारत के विरोध में प्रोपेगेंडा क्रिएट करने के लिए, ताकि उन देशों में, जिन देशों में डेलीगेट्स यहां पर आएंगे, वहां पर भारत की छवि खराब की जाए, वहां पर भारत के खिलाफ झूठ फैलाया जाए। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से तमाम डेलीगेट्स पहुंचे हैं मीटिंग में शामिल होने के लिए, पाकिस्तान की कोशिश पूरी तरह से विफल हुई है, नाकामयाब हुई है। और इसी बीच हम देख पा रहे हैं कि अब आखिरी पैंतरे के तौर पे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो इस वक्त POK पहुंचे हुए हैं। कल भी उन्होंने वहां पर कथित असेंबली को एड्रेस करके भारत के खिलाफ जहर उगला था। आज भी मुजफ्फराबाद से करीब 80 किलोमीटर की दूर पे एक इलाका है बाग, वहां पर वो एक प्रोटेस्ट करने वाले हैं इसी मीटिंग के खिलाफ में। तो कहीं ना कहीं कोशिश लगातार आज भी जारी है पाकिस्तान की तरफ से, भले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो विफल हो गई हो। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि इस चिट्ठी में तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। 6 पेजों की ये चिट्ठी है और इसमें कहा गया है भारत के खिलाफ NRC और माइनॉरिटीज का स्टेटस का आरोप लगाया गया है कि वो खराब है। और अतीक अहमद की जिस तरह से हत्या हुई थी उसका भी जिक्र किया गया है। अतीक अहमद को वो हीरो के तौर पर देख रहे हैं। तो जाहिर तौर पर भारत को जिस भी प्लेटफॉर्म पे बदनाम करने की कोशिश को लगातार करते आ रहे हैं। कल भी हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ने वहां पे कथित असेंबली में एड्रेस किया था। उससे पहले गोवा में भी उन्होंने वही सब बातें कही थी जो वो कहते आ रहे हैं। और अहम बात ये कि जब आतंकवाद की बात आती है, सीमा पर आतंकवाद की बात आती है, तो पाकिस्तान उस पर खामोश हो जाता है। उनके पास कोई इस पे वो उसको कबूल करने को तैयार नहीं है, जो असल मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच में एड्रेस करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये फिर कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, औपचारिक रूप से सभी एम्बेसीज को ये कहा गया था कि भारत के खिलाफ माहौल बनाइए ताकि इस मीटिंग को होने से रोका जा सके। लेकिन फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि इन तमाम कंट्रीज से जिनको इन्वाइट किया गया था और जो G20 मेंबर कंट्रीज हैं, वो उनके तमाम डेलीगेट्स इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हैं और वहां की खूबसूरती का वो मजा ले रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर बातचीत करने के लिए। तो पाकिस्तान एक बार एक तरह से फिर बेनकाब हुआ है और जो प्रोपेगेंडा है वो इस बार एक तरह से फिर फेल हो गया है पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा। चलिए, G20 पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।